Last week under our stock recommendations, we didn't recommend any stocks to enter into just because we were aware about some big volatility to be seen into markets for the upcoming week. It was the same. If you have noticed, market पहले एक गैप अप ओपनिंग हुआ, बाद में अचानक से गैप डाउन ओपनिंग आया और उतना ही गैप अप दूसरे दिन आया. तो ये एक गजब वॉलेटिलिटी की जो हमको लग रही थी वो हो गई और उसकी वजह से हम लोगों ने एक भी रिकमेंडेशन नहीं दिए थे. मोरोवर अंडर इंडेक्स सेगमेंट हमने जो कहा था उसी रेंजेस के बिटवीन प्ले हुआ है. यू कैन चेक इट इन अवर लास्ट वीडियो. मोरोवर इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड ने अंदर गोल्ड के लिए हम बुलिश थे एंड देयर वाज अ बिग अपसाइड ऑफ मोर देन 4% इन लास्ट वीक. सिल्वर एक के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे, वी वर बुलिश, बट ओवरऑल वी बिलीव यू मस्ट हैव मेड अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. Hello everyone, myself Siddharth Shah, a stock analyst by profession, and this video is all about market outlook for this week starting on 15th October 2018. As analyzed by me with my team, the market outlook for this week is here. Talking about Nifty 50 and the index segment, we believe the Nifty to remain within the range which is given on the screen. You can check it out. Moreover, talking about Bank Nifty, the Bank Nifty can also show a play within the ranges which is given on the screen. Overall, we are very bullish on Nifty as well as Bank Nifty for this week. But mind well, this bullish market would only trend to some days only, not more than that. Why? What are the reasons behind the same? As per the chart reading what we have conducted, जिस तरह की पैटर्न लास्ट 3 दिन के अंदर निफ्टी ने दिखाई है, वैसी ही पैटर्न निफ्टी के अंदर अभी तक 12 बार बनी है. उन 12 में से 11 बार ये पैटर्न फेल हुई है विद इन 12-15 डेज. अगर यही चीज इस बार भी हुआ तो मार्केट वुड क्रैश डाउन अगेन एंड बुल मार्केट वुड बी ओवर फॉर अ सर्टेन पीरियड अगेन. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हम कह सकते हैं कि यू कैन गो ऑन बाइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड विद इन द रेंज गिवन ऑन द अपर साइड. एक बार वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद निफ्टी का ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. मोरोवर लास्ट वीक के अंदर जो हैवी करेक्शन हम लोगों ने देखा था उसका बहुत बड़ा रीजन एफआईआई विड्रॉल्स भी था. अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ जितना एफआईआई विड्रॉल हुआ था लास्ट 15 दिन के अंदर. मोरोवर वी कैन इवन सी कि ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस भी बहुत जबरदस्त तरीके से करेक्ट हुए थे इन द लास्ट वीक बाय 4.55%. सो वी हैड एन इफेक्ट ऑन आवर इंडेक्सेस. लेकिन उसको भी नजरअंदाज करते हुए निफ्टी ने एक बुलिश ट्रेंड दिखाया है. तो वी आर श्योर अबाउट द हैपनिंग्स कि नहीं, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस लेवल तक ही होगा. कीप दिस इन माइंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. Under commodity segment, talking about gold market, the last close of gold on MCX was at 31,846. We believe the gold to play within this range which is given on the screen. Last week जो एक अपसाइड हमने देखा 4% से ज्यादा, वो एक रैली होने वाला अपसाइड है. Usually once or twice in 2 or 3 years it is happening of such kind. लेकिन हर बार जब पास्ट में ये हुआ है तो कुछ ही दिनों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखा है, तो उसकी वजह से एक थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड करेक्शन. ओवरऑल द गोल्ड इज ऑन अ बुलिश ट्रेंड, सो कीप होल्डिंग गोल्ड if at all you are holding, and if at all you are looking to buy or go long on gold, then we would recommend you to go long only after the end of Tuesday or on the start of Wednesday, whichever you feel feasible. Talking about silver, the last close of silver shown in the last week was a bit bearish. After a short correction in silver, we expect a good upside into silver for this week. Be long on silver. Within this range, it may show up. Keep this in mind and trade accordingly. Now let us talk about some upcoming events to the market during the week. Talking about bonus, split, dividend, right issue, quarter results and upcoming IPOs. Approximately 94 companies on BSE are declaring their quarter results of last quarter during the week. Moreover, these 3 companies are declaring split during the week. CES Limited is declaring bonus during the week, and there are no companies declaring dividend for the week. Moreover, there are no even mainstream IPOs coming up for this week. Then, what should be your strategy to trade during the week? Under F&O segment, we would recommend you to go long on auto sector. The first choice of our side would be Tata Motors. अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों के अंदर सबसे ज्यादा करेक्शन अगर दिखा हो तो ऑटो सेक्टर के अंदर ही था, लेकिन लास्ट वीक के अंदर सारे के सारे ऑटो सेक्टर ने एक अपसाइड दिखाया सिवाय एक टाटा मोटर्स के. वी एक्सपेक्ट टाटा टू शो अ गुड अपसाइड ड्यूरिंग द वीक. यू कैन ट्रेड विद द स्टॉप लॉस गिवन. Our second pick would be Reliance Industries. Usually ऐसा देखा गया है कि निफ्टी की मूवमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिखाने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला ही है. तो अगर निफ्टी के अंदर हमको ऑफसाइड दिख रहा है, देयर आर फेयर चांसेस कि रिलायंस के अंदर वो पहले दिखे और उसकी वजह से निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट आए. कंसीडरिंग दिस, वी हैव टेकन रिलायंस विद द गिवन रेंज ऑन द स्क्रीन. टेक अ नोट ऑफ इट.
Our third pick for the week would be L&T Financial Holding. The range of play what we expected to have is here. We are again bullish on LTFH. Keep this in mind and trade accordingly. Last pick for the week would be of MGL, Mahanagar Gas Limited. Under this sector, this is one of the good companies what we think could show a very sharp upside in a very short span due to a big correction shown with some volume, and then after a big upside is also being shown in the last days of the last week, and due to this reason we are picking up right now. लास्ट वीक हम लोगों ने कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए है. वी वुड बी रिकमेंडिंग स्टॉक्स ऑन विच यू कुड गिव अ लॉन्ग टर्म बाय. हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है. वी वुड बी से अपलोडिंग अ वीडियो सून ऑन दैट टू. We hope you must have liked this video. Like this video, we will be available with you every Monday morning talking about market outlook for the upcoming week. Do share the video and subscribe to the channel for further updates. Moreover, if you have any queries, you can drop us a mail on our official ID connect@yourcapita.com. Till then, stay connected, stay invested along with Your Capita, as we just don't make money, we make a difference. Allow me to mention that we are not registered with SEBI. All our views are for learning purpose. Please consult your financial advisor before acting on any of our advices. We would humbly request you to keep this in mind and trade accordingly.